Hello, welcome back to my YouTube channel. This is Naaz Arora. आज टाइम है गेट रेडी विद मी का। तो मैं कोशिश कर रही हूँ मैं हिंदी में व्लॉग करूँ। हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, सो मैं चाहती हूँ कि मैं हिंदी में व्लॉग करूँ। आज सबसे पहले मैंने अपनी आउटफिट की है स्टीमाइन, जो कि आप देख चुके हैं। उसके बाद मैं अपने हेयर कर रही हूँ स्ट्रेटन। नाउ आई हैव ऑलरेडी डन द फेस प्रेप, जो कि मैं पहले कर चुकी हूँ। आई एम जस्ट कंसीलिंग द रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ माई फेस एंड देन ब्लेंडिंग इट आउट। मैंने मैक का प्रो कंसील यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने स्किन टोन से मैचिंग मीडियम टोन्स यूज़ किए हैं और ये पैलेट मीडियम 2 ही है। उसके बाद मैं अपने फेस बेस के लिए एक बहुत ही हाइड्रेटिंग SPF फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ क्लिनिक से। इसका डिटेल रिव्यू आप मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे देख सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। Well, the texture of this foundation is very beautiful. It sits so amazingly on my skin. I'm using this pack foundation brush to blend it all out. This is the same brush that I used as for my concealer as well. And for highlighting, I will be using a separate brush. Guys, don't forget to cover your ears. That is a must, and so is your neckline. You make sure you look the same color. I have seen people make this mistake so much that I can't tell you. That's why I made sure that I told you the same. Now we are going to shift to the concealer part. I'm using the same palette from MAC that I mentioned earlier, and my brush, concealer brush, is from Makeup Forever. I'm just using this to highlight the high points and the under eye area. Look at how beautifully this sits. I'm using the lightest shade, which is the yellow tone in the palette. This is a beautiful palette, works for many Indian skin tones. And now I am just patting it in the place. याद रखिएगा, जो कंसीलर है आपने वो एक ही जगह पे प्रेस करना है, ना कि अलग अलग जगह। उसको ब्लेंड करना है, उसी जगह पे प्रेस इन करना है हमने। उससे क्या होगा, कंसीलर बहुत अच्छे से आपकी आईज़ के नीचे बैठेगा। हाँ जी, मुझे पता है हिंदी इंग्लिश अब वॉइस ओवर में मिक्स हो चुकी है, क्योंकि मुझे आदत है इंग्लिश में वॉइस ओवर करने की। तो इसलिए मैं दोबारा से हिंदी में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे याद आ गया है आज मैं ट्राई कर रही हूँ हिंदी में गेट रेडी विद मी का। सो अब मैं सिर्फ उसको प्रेस करके जितनी रिक्वायरमेंट है उतना एरिया कंसील कर रही हूँ और उसको अपलिफ्ट कर रही हूँ। दिस शेड इज़ 1 टोन लाइटर टू माई स्किन। मैंने बहुत हल्के हाथ से ये लिया है, बहुत बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। अब आप प्रॉपर लाइटिंग में देख सकते हैं और आपको पता चलेगा जो मेरा लेफ़्ट और राइट आई में जो डिफरेंस है। एंड आई थिंक वी आर डन विद इट। नाउ आई एम यूजिंग द हुडा ब्यूटी ईजी बेक बेकिंग पाउडर इन द शेड पाउंड केक। ये वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स है फ्रॉम हुडा ब्यूटी। और उसके अलावा इनके आई शेडो पैलेट्स बहुत अच्छे हैं। आज हम हुडा ब्यूटी का ही न्यूड आई शेडो पैलेट यूज़ कर रहे हैं इन द शेड लाइट, और एट्यूड का लेदर शॉप पैलेट। और मैंने हुडा ब्यूटी का ही लाइट ब्राउन लेके अपनी क्रीज लाइन में आई के लगाया है, और उसके बाद उसका डार्कर टोन लेके मैंने पहले एक हल्का सा स्केच बनाया फॉर अ विंग आई लाइनर। उसके बाद मैंने एट्यूड का डार्क ब्राउन कलर लेके उसको हाईलाइट किया है। नाउ फॉर द अंडर आई पार्ट आई एम यूजिंग दिस लाइट मूव कलर टू हाईलाइट द अंडर आई पार्ट ऑफ द आई। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अब अंडर आई के लिए मैं लाइट मूव कलर यूज़ कर रही हूँ और कॉर्नर को मैं ब्राउन कलर से हाईलाइट कर दूँगी, जो आउटर कॉर्नर है डार्क ब्राउन टोन से। ये देखिए, अभी बिल्कुल मैं आई के सेंटर हाफ में जाके छोड़ दूंगी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल आई लुक है। आप चाहें तो यहाँ पे भी आई लुक ख़त्म कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा एग्जैजरेट करूँगी, क्योंकि आई लाइक अ लिटिल ड्रामेटिक लुक्स बट इन न्यूट्रल शेड्स। तो अब मैंने ये दोनों आईज पे सेम स्टेप कर दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू डस्ट ऑफ द बेक। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में मैक का एक प्रेस्ड पाउडर फाउंडेशन ले रही हूँ, कॉम्पैक्ट जो है, और उसको अपने रेस्ट ऑफ द फेस पे यूज़ कर रही हूँ to give it that even skin tone. And because summers have already started and I do sweat a lot, I'm going to dance my heart out. तो मुझे डेफिनेटली पाउडर टॉपिंग की ज़रूरत इसलिए है। और डोंट वरी, मैं बहुत लाइट हैंड से यूज़ कर रही हूँ। मेरा फाउंडेशन बिल्कुल भी केकी नहीं हुआ था, इवन दो मैंने काफ़ी रात के 3 बजे तक रखा था। एंड आई वेंट टू द पार्टी अराउंड 8, so 7 hours it was no budge. Now I'm using the two
फेस्ड पाउडर ब्लश। ये है मेरे फेवरेट शेड वाटरमेलन रेन में। अब मैं यूज़ कर रही हूँ काइली जेनर का 3-in-1 पैलेट, जो आप मेरी काफ़ी सारी वीडियोस में देख चुके हैं। इसी से मैं कॉन्टोर करूँगी और इसी में जो मेरा मीडियम टोन का हाइलाइटर कलर है वो मैं हाईलाइट के लिए यूज़ करूँगी। आई एम ऑल्सो कॉन्टोरिंग माई नोज़ फॉर अ चेंज बिकॉज इट्स अ नाइट इवेंट, सो आई एम ग्लैमिंग अप further. Now I'm using the highlighter and we'll shift to the next step post this. Look at how glowy this highlighter makes my face look. और ये इंडियन स्किन के लिए बहुत ही सुंदर है। जो सेकंड टोन है इसका, फर्स्ट इज डियर डार्लिंग, आई डोंट यूज दैट एनी मोर। नाउ आई एम यूजिंग द सिंपली नैम आई कर्लर टू कर्ल माई लैशेज। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ टू फेस का जो ब्राउन नया मस्कारा लॉन्च हुआ है वो, बिकॉज ये ब्राउन आई लुक है, इसके साथ ब्राउन मस्कारा मेरी आईज़ को और भी इंटेंसिफाई करेगा। और जो लेफ़्ट ओवर प्रोडक्ट है बिल्कुल खाली जब ब्रश हो जाता है, वही मैंने यूज़ कर लिया है टू सेटल इन माई आईब्रोज एंड सेट देम इन प्लेस। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ब्राउन मस्कारा एंड बिकॉज इट्स ब्राउन टोन दैट इज़ वाई मैंने ये यूज़ किया। अब मैं अपना ब्यूटी स्पॉट क्रिएट कर रही हूँ एंड आई एम हाईलाइटिंग my tattoo because of the foundation color. It has gone lighter, so this is a permanent tattoo, guys. This is a twin tattoo with my mother. For those of you who don't know, my mom and I have it on the same like area on the neck. Now I'm highlighting my wing further and I'm just drawing a stroke with this Maybelline eyeliner. You know, this is the famous colossal eyeliner from Maybelline. Guys, now I am using the same Kylie palette to highlight my inner corner. I think I need to just create an eagle eye effect for that. Now I am first creating that lip lining and हम काफ़ी क्लोज आ चुके हैं मेकअप के एंड रिजल्ट पे। वेरी वेरी एक्साइटेड। आई एम क्रिएटिंग a little pout effect. This is how I do my lips right now. This is my current favorite lip technique. This just makes the center appear more fuller. So I cut my lips at the corners, at the edges. मैं अपने lips edges से छोटे कर देती हूँ तो attention बहुत particular हो जाता है. Now I'm creating a eagle eye effect. मैं अपने lower eye पे create कर रही हूँ and I'm trying to create a very sharp corner, if you can see, and I'm further curling my lashes. This will give it that falsies effect. बहुत ही सुंदर लग रहा है ये आई मेकअप। काफ़ी ड्रामेटिक भी हो गया है जैसे मुझे चाहिए था। आई एम कीपिंग माई हेयर वेरी स्ट्रेट, accessories very minimal, but I do like a heavy eye makeup. Okay, that's my lipstick. It's from Simply Nam and it's in the shade Shika. It's a beautiful nude shade. It's a butter matte texture. And these lipsticks are amazing. One of the best for Indian skin tone. They have the best nudes. Like, this is non-sponsored, but I have almost all of their nude shades. I am wearing this limited edition Guess watch. And this is from the, I think, the JLO collection. I love it. My outfit is purple. Let me change it. You need my rabbit tapes. Okay, I'm clumsy AF right now. Upper. Now it's time for the drape skirt. Very pretty. Okay. Ooh. I'm wearing my rings. Very late already. My 6-inch long heels. Carrying this beautiful portly bag. Very very late. I think, guys, that's it. मैं अपनी final look आपको अभी दिखाती हूँ. Okay, this is the final look, you guys. So I am ready for my friend's Sangeet. Sorry, my friend's cocktail. I'm so confused because of the fact that I'm late. Yeah, I love how my look has turned out. Love my pleated skirt. I'll give you a back look. The final look. We love it, don't we? I did an Arabic eye makeup. Look at that. My final look. You guys, I have to move back, but I think I love it.
Bye. I hope you enjoyed this vlog. Don't forget to subscribe.